Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 8, and here is your science teacher Salma. Dear students, your first chapter has been completed, and now we are going to start chapter number 2, reproduction in plants. So, the chapter number 2 is reproduction in plants. Dear students, I hope you all have learned the first chapter very well. So, dear students, chapter number 2 is reproduction in plants. So, as you know that animals and plants both need to be reproduced to produce their offspring. What is reproduction? What is the definition of reproduction? It is the process by which living organisms produce their offspring. रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए हमारी जो जनरेशन है, ठीक है, वो बढ़ती है, ठीक है, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म इस रिप्रोडक्शन के ज़रिए आते हैं, ठीक है. तो all living things must be reproduced to continue their species by replacing though they die. It means living organisms need to reproduce. If living organisms not reproduce, they will die. So हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नस्ल है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए ज़रूरी है कि वो रीप्रोड्यूस हो. इट मीन्स दे नीड टू reproduce their offspring. So as animals, plants also need to reproduce, and in plants, flowers are the reproductive system of the plants. So what are the flowers? Flowers are the reproductive system of a plants. So how can you define a flower? आप एक फ्लावर को किस तरह डिफाइन करेंगे? So what is flower? Flower is a reproductive part of a plant. For example, this is a flower. Okay, look at this. This is a flower. What is it? It is a reproductive part of a plant. It contains both male and female reproductive part of the plants. And look at this carefully. This is called the female reproductive part of the plant. This red type is called female reproductive part of the plant, and this yellow seeds are called the male reproductive part of the plant. So this is a female reproductive part of the plant, and this is a male reproductive part of the plant. And the male reproductive part of the plant, these yellow are called stamen, and this red is called carpel. What is the name of this red part? This is a female reproductive part of the plant, and its name is carpel. And this is a male reproductive part of the plant, and its name is stamen. So this is a flower. It contains both male and female reproductive part of the plant. So दोनों ही एक ही फ्लावर पे होते हैं, मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं. So students, now you will learn about the structure of the flower. ठीक है, आप क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फ्लावर की. Look at this. These are the green color structures, and green structures are called sepals. Sepals are usually green in color. And what is the function of sepals? They protect the flower. ये क्या करती है सेपल्स? ये जो ग्रीन कलर की है, ठीक है, ये मैं इनको तोड़ के दिखाती हूँ. ये क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है. Then sepals, there are the brightly colored scattered part called the petals. So this is what? This is a petal. Petals are usually colored part of the plant. So what is the function of these petals? They attract the insects. ठीक है, इन पेटल्स की वजह से डिफरेंट इंसेक्ट क्या करते हैं? प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है. अब देखिए, देन देयर आर एन अदर part called the stamen. And what are stamen? Stamens are these male reproductive part. These are yellow in color. Okay, this is what? This is a stamen. And this part of the plant is called
carpel. Look at this. This is a carpel. ये क्या है हमारे पास? ये है carpel. And carpel is the female reproductive part of the plant. Okay. Here is in other plant, other part of the plant in male called the anther. Anther. What is anther? This is a male reproductive part, and here is an other structure called the anther. And what is the function of anther? Anther के अंदर क्या होते हैं? पोलिन ग्रेन्स होते हैं. अगर हम इस छोटे से येलो कलर को देखें खोल के, तो इसके अंदर बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं पोलिन ग्रेन्स. ठीक है. और ये जो स्टिग्मा होती है, ठीक है, अगर हम इस पार्ट प्लांट को देखें तो ये क्या है हमारे पास? दिस इज अ स्टिग्मा. ठीक है. अब ये स्टिग्मा क्या करती है? जो है ये पिकअप करती है किसको? पोलिन ग्रेन्स को. ठीक है. दिस इज अ स्टिग्मा. आप इस येलो कलर को तोड़ के देखेंगे, ठीक है, तो इसमें जो ये वाली स्ट्रक्चर है ये है स्टिग्मा. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा? Stigma is the tip of carpel which collect the pollen grains. Now here is another part called the ovary. Ovary where the female gametes are the produced. And here is a food form in a plant called the solution where the insect can take its food from the plant is called the nectar. So how you can define the nectar? It is a sugary solution. So insect collect its food from the nectar. अब सबको पता है कि हनी बीज वगैरह या दूसरे इंसेक्ट्स आकर क्या होते हैं? इंसेक्ट प्लांट पे अटैच होते हैं. और जब ये अटैच होते हैं तो ये क्या करते हैं? प्लांट में से अपना फूड लेते हैं. जब ये प्लांट में से अपना फूड लेते हैं तो यहाँ पे जो पोलिन ग्रेन्स, ये जो इनसे येलो कलर जो मेल स्टेमिन से इनसे कुछ पोलिन ग्रेन्स निकलते हैं वो इंसेक्ट्स पे चिपक जाते हैं. ठीक है. तो अब ये क्या करते हैं? इंसेक्ट्स इन पोलिन्स को कैरी करके लेकर जाते हैं किसी दूसरे जो है वो प्लांट के पार्ट के पास. ठीक है. यानी कि दूसरे फ्लावर के पास लेकर जाते हैं उस पोलिन ग्रेन्स को. तो फिर पोलिनेशन होती है. पोलिनेशन विल बी डिस्कस्ड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. In this lecture, you have learned about the flower and parts of the flowers. So, these were the different parts of the flowers. You have learned about the sepals, petals, stamen, anthers, and carpels. So, now your homework is you have to solve the question number 1, question 2, and question number 3. It means from question number 1 to 3. Book page number 17. Okay, thank you all. Have a good day.